Namaskaram and a very warm welcome to everyone present here. Today we have gathered here to celebrate Onam, the harvest festival of Kerala, a time of joy, unity and cultural richness. Onam is not just about tradition but also about togetherness, celebrating King Mahabali's return and showcasing India's diverse art forms. Onam is that magical time of the year when Pookalams boom, Sadyas make our bellies happy and everyone gets up to dance a little. So, can you guess who's the Mahabali for this year? Any guesses? Okay. So, our Mahabali is here. You can look behind. Let's give a round of applause for our Mahabali. He's here. Can you look behind? So our Mahabali is here. Let's sit back, relax and let's immerse yourself in this vibrant journey of music, dance and colors. Now I call upon our chairman and secretary of Mount Road Pristine Society and our festival committee to light up the lamp. I also call upon Sarojini aunty. Celebration by invoking Lord Ganesha, the remover of obstacles and the indication of good fortune. Let's start today's program with a soulful Ganesh Vandana. I call upon Aditi, Ritika and
Joshika. Now, devotion is expressed through music, and it is one of the purest forms of prayer. To fill this hall with divine energy, I would like to invite Subin on stage to present a beautiful devotional song. Let's give a round of applause to welcome Subin. Okay, so this is a Guruvayurappan devotional song from the album Mailpili, which was released when I was in college. That would be in 1998. So, written by S. Rameshan Nair, composed by KJ Jain of the Jaya Vijaya duo, sung by HOS. सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुभमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्।
ചന്ദന ചർച്ചിതകളേവരും എൻ്റെ മനോഹരമേഘം ചന്ദന ചർച്ചിതകളേവരും എൻ്റെ മനോഹരമേഘം കായാമ്പൂവിലും എൻ്റെ മനസ്സിലും കരിമഴ പെയ്യുന്ന മേഘം ചന്ദന ചർച്ചിതകളേവരും എൻ്റെ മനോഹരമേഘം കായാമ്പൂവിലും എൻ്റെ മനസ്സിലും കരിമഴ തിരുമാറിലെ വനമാല പൂക്കളിൽ ആദ്യ വസന്തം ഞാൻ ആ തിരുമാറിലെ വനമാല പൂക്കളിൽ ആദ്യ വസന്തം ഞാൻ ആപദ പങ്കജമാദ്യം വിടർത്തിയ സൂര്യപ്രകാശം ചന്ദന ചർച്ചിതകളേവരും എൻ്റെ മനോഹരമേഘം കായാമ്പൂവിലും എൻ്റെ മനസ്സിലും കരിമഴ പെയ്യുന്ന കാളിന്തിയെന്നും കാണിലെന്നും കേട്ടു ഞാൻ കൗസ്തുഭമെന്നും കാളിന്തിയെന്നും കാണിലെന്നും കേട്ടു ഞാൻ ഉറക്കെ ചിരിക്കുവാൻ മറന്നോരെന്നെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളാക്കി ചന്ദന ചർച്ചിതകളേവരും എൻ്റെ മനോഹരമേഘം കായാമ്പൂവിലും എൻ്റെ മനസ്സിലും കരിമഴ ചന്ദന ചർച്ചിതകളേവരും എൻ്റെ മനോഹരമേഘം Thank you, Subin Chetta. So, Kerala's Onam is incomplete without Tiruvadira. Like every year, we have the non-Malayalis performing Tiruvadira this time. It's a graceful women's group dance performed around a lamp. It symbolizes devotion, togetherness, and celebration of feminine grace. Please welcome our performers for Tiruvadira. Shashivarnam
चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ശ്രീമദാനന്ദപുരത്തിൽ വാഴും സ്വാമി ശ്രീപത്മനാഭന്റെ പാദപത്മം നാം ഇതു ചിന്തിച്ചു പാർവതി റാണിയെ വന്ദിച്ചു വാഴ്ത്തിക്കടിച്ചിടേണം സഭ വന്ദിച്ചു കുമ്മിയടിച്ചിടേണം സഭ വന്ദിച്ചു കുമ്മിയടിച്ചിടേണം അന്തനേന്ദ്ര വാക്യശാസ്ത്രം അന്തമറ്റു കൊണ്ടു സന്ധികൾ കീഴന്നു പാർത്തനന്ദനായി കടന്നു ബന്ധുവായ വിപ്രൻ തന്റെ സന്തതിയെ കാണാൻ അന്തകപുരത്തിലെത്തി ചന്തമോടു വേഗം ഗൗരവാദി നരകങ്ങളൊക്കെയും തിരഞ്ഞു കൗരവേന്ദ്രനോരിടത്തും കണ്ടതില്ല പനെ വിപ്രതനയനെയെങ്ങും കണ്ടിടായിക മൂലം അപ്രമേയ സമൻ പ്രദേശം വീട്ടു അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു സുഖമായി തിരിക്കുമ്പോൾ രാമദേവൻ പള്ളി വീട്ടേടുന്നള്ളക്ക് മാറാനന്മാർ മൂവരുമായി മനസ്സൊത്തു നിരൂപിച്ചു ഇലയോടു ഗാഠമായി പറഞ്ഞ ഓണം അരജന്റെ രൂപഗുണം ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കതു മായയായി കാണണം സീതേ അതു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല രാമദേവൻ അറിയുമ്പോൾ കലിക ലക്ഷ്മണ എന്നും അരുളി ചെയ്തു ഭുവനേശ ഭൂതനാഥ ശബരിഗിരി വാസദേവ പന്തള രാജകുമാര ദേവ നിത്യ ജയ മംഗളം മംഗളം Hello. After that performance, it's time for our cutie pies. Onam is about joy and innocence. And who better to show that than our little champs?
Get ready for the maximum cuteness on stage. Please cheer loud for our next performance. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలబనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి ఏ గచ్చ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి కూర్చొని మాట్లాడండి. Elegance. Classical dance is where rhythm meets tradition, where every gesture tells a story. So let's welcome our performers Rashmi, Lekha and Nisha as they bring the timeless charm of Indian classical dance to life. Salom
ആന്തോളനം ദോളനം മധുരിപു ഭഗവാൻ മാനസമുരളിയെ ചുംബിച്ചുണർത്തുന്നൊരാനന്ദലഹരി ആന്തോളനം ദോളനം മധുരിപു ഭഗവാൻ മാനസമുരളിയെ ചുംബിച്ചുണർത്തുന്നൊരാനന്ദലഹരി ആന്തോളനം 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 ദോളനം ആന്തോളനം ദോളനം മധുരിപു ഭഗവാൻ മാനസമുരളിയെ ചുംബിച്ചുണർത്തുന്നൊരാനന്ദലഹരി ആന്തോളനം ദോളനം ആന്തോളനം ദോളനം. Wasn't that a really beautiful performance? Thank you. So next is something very close to the heart, a mother-daughter duo. Aditi Mudliar and her mom Kalpana are here on the stage, and Onam is all about family and togetherness. What better way to show it than this performance filled with love? Give it up for the mother-daughter duo. மலையூரு காட்டாம மனச காட்டு பூட்டாம ஒன்ன போல யாரும் இல்ல மாமா தஞ்சாவூரு ரசாங்க தாராளமா தந்தாங்க மனசுக்குள்ள எவரும் இல்ல ராமா தொட்டதெல்லாம் தோல் பறக்கத மம்பட்டியா அட மம்பட்டியா எடத்துக்கு போடி பறக்கத மம்பட்டியா அட மம்பட்டியா எட கூட கால கலக்கத மம்பட்டியா அட மம்பட்டியா பத்த கூட பாட பறக்கத மம்பட்டியா அட மம்பட்டியா மலையூரு நட்டாம மனச காட்டு பூட்டாம ஒன்ன போல யாரும் இல்ல மாமா तालियां जोर से बजनी चाहिए. Come on, Margaret. ஆசை பட வச்சான் ஆள விழ வச்சானே ஏ மாப்ள போலாம் இரு மச்சான் ஆட வர வச்சானே நட்டா மயிலாட்டம் இருக்கா மலக்கூடை மாமலிக்கா ஏ பாரா ஊவாரா ஏ சீரா ஏ மீரா ஏ நெத்தியில நெல்லவட்டம் வச்சவட்டம் சுறவட்டம் ஒட்டு மொத்த தென் மாவட்டம் ஓசை கட்டி வந்து நிக்கட்டும் ஏ பங்கே ஆண்டி சட்டன கட்ட ஆட்டம் பம்பரம் கட்ட Let me hear the loudest cheer. Come on, audience. ஆட்டா பல்லாட ராஜா நல்லாட லிண்டா நம்மோட ஹே 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 சட்டட போறா திருச்சி வந்தல்லே தெரிக்க விட்டான்
side dish of Sadhya? It's a general question. Okay, for me, as this is a cultural program, laughter is the side dish of Sadhya. So, and guess who's bringing it up today? Our very own Lini Auntie, queen of mimicry and guaranteed giggles. Hold your stomach because it's time for some serious fun. Lini Joseph, please on stage. हेलो गुड इवनिंग मॉन्टवर्ड। सो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा मिमिक्री पेश करना चाहूँगी, तो होप आप सबको पसंद आए। तो हुआ यूँ कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा देखने गई थी और ऑर्केस्ट्रा देख के बाहर आई चाय पीने बैठी थी। तो मेरे सामने एक मद्रासी जिसने फर्स्ट टाइम ऑर्केस्ट्रा देखा था, वो एक उसके फ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहा था कि उसने क्या देखा, और उसके फ्रेंड ने कभी ऑर्केस्ट्रा देखा नहीं है। तो कैसे एक्सप्लेन करता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। या ऑर्केस्ट्रा सॉलिड। तो बोलता क्या सॉलिड? अयो क्या बताऊँ तुमको, एक स्टेज में 4-5-6 आदमी लोग खड़ा था और सबके पास कुछ न कुछ सामान था। क्या करता था क्या मालूम, लेकिन आवाज सॉलिड। नहीं लेकिन क्या सॉलिड क्या था क्या? तो वो बोलता है, सबसे पहले वो हारमोनियम के बारे में बोलते हैं। एक आदमी एक साइड में एक लकड़ी का डब्बा गले में लटकाया और एक हाथ से वो इधर से दबा रहा और एक हाथ से कुछ ढूंढ रहा। बहुत देर से ढूंढ रहा बेचारा, से इधर से दबा रहा, इधर से ढूंढ रहा। क्या ढूंढता क्या मालूम, लेकिन आवाज है सॉलिड। फिर वो दूसरा गिटार के बारे में बोलता है। एक आदमी बीच में खड़ा था, वो गले में उसने भी एक लकड़ी लटकाया हुआ था और एक हाथ से वो ऊपर गुजली करता और कभी नीचे करता, कभी बीच में भी करता, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में। कितना देर से गुजली कर रहा था बेचारा, लेकिन आवाज सॉलिड। फिर उसके बाद वो सैक्सोफोन के बारे में बोलता है। एक आदमी, मुझे सबसे दया वो आदमी के ऊपर आए, वो एक लंबा पाइप लेके खड़ा था। वो पाइप में बहुत सारा होल था, छोटा होल बड़ा होल, सिंधु होल, इधर एक सिंधु है उसको मालूम है होल। तो छोटा बड़ा बहुत सारा होल था और वो फूक रहे। कितना देर से फूक रहा था, लेकिन आवाज सॉलिड। फिर उसके बाद वो वायलिन के बारे में बोलता है। एक आदमी वो भी साइड में खड़ा था, वो भी लकड़ी लटकाया हुआ था और एक छोटा सा लकड़ी भी हाथ में था। वो कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, क्या करता क्या मालूम। बहुत देर से कर रहा था, लेकिन आवाज सॉलिड। फिर लास्ट में वो ड्रम्स के बारे में बोलता है। एक आदमी सबसे डेंजर आदमी साइड में बैठा था, घर का सारा सामान लेकर बैठा था। वो घर का सारा किचन का सामान लेकर बैठा था। डाल का डब्बा बड़ा छोटा डब्बा बड़ा डब्बा, बहुत सारा डब्बा, और साइड में प्लेट भी लगा था और हाथ में 2 डंडा। वो डंडे से कभी डाल का डब्बा छोटा बड़ा, कभी ये डब्बा वो डब्बा, कभी प्लेट, कितना देर से इसको मार रहा उसको मार रहा, लेकिन आवाज है
So for our next performance, we are blessed to listen to the timeless compositions of Sri Purandara Dasa, the father of Carnatic music and a saint whose bhakti-filled songs continue to guide us every day. His Bhakti Geetams are not just music, but a pathway to devotion and inner peace. Now to present a soulful Purandara Das Bhakti Geet, I invite Shobha Rajput Aunty to the stage. Please join me in welcoming Shobha Aunty with a round of applause. मेरा नाम शोभा राजपूत है। मैं पुरंदर दास का भक्ति गीत गा रही हूँ। ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀನಿತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಖಿಲವಾಯ್ತೆನಗೆ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಸುಖದಿಂದ ಬೇಡುವೆನೆ ಸತಿಯಿಂದ ಖಳಪತಿಯು ಕ್ಷುತಿಯೊಳೆನಾದ ಸುತರನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಸುಖದಿಂದ ಬೇಡುವೆನೆ ಸುತರಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗತಿಯೇನು ಪಡೆದ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಸುಖದಿಂದ ಬೇಡುವೆನೆ ಸತಿಯಿಂದ ಖಳಪತಿಯು ಕ್ಷುತಿಯೊಳೆನಾದ ಸುತರನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಸುಖದಿಂದ ಬೇಡುವೆನೆ ಸುತರಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗತಿಯೇನು ಪಡೆದ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಧನವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ದೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವೆನೆ ಧನದಿಂದ ಅವಧೂತ ಗತಿಯೇನು ಪಡೆದ ಬಂಧುಗಳ ಕೊಡು ಎಂದು ಬಯಸಿನ ಬೇಡುವೆನೆ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದೇನು ಆವಾಲಿಗೆ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೇಡಿದುದ ಕೊಡುವೆಯ ದೇವಾನಿನಿಂದು ರೂಢಿಯೋಳು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪರರೊಡವೆ ಅನವರದ ಯಾಚಿಸದಂತೆ ಇರಿಸೋ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Imagine the spins of Kathak meeting the soulful vibes of Sufi music. That's Sufi Kathak. It's not just dance, it's devotion in motion. Kathak, one of India's 8 classical dance forms, is known for its graceful spins, rhythmic footwork, and expressive storytelling. The whirling movements represent the eternal search for the divine, while the graceful gestures reflect surrender, love, and spiritual connection. It is a perfect blend of tradition, rhythm, and devotion, leaving both the dancer and the audience in a state of trance. Let's welcome Apurva Komavar, Shweta Deshmukh, Amruta Naik, Ketki Jain on stage. Watch closely or you might get dizzy with the beautiful spins. ओ रंग रे
बस तेरा बनके हाय नहीं रहना तुझा बनके एक भी सांस अलग नहीं लेनी एक भी सांस अलग नहीं लेनी खींच लेना प्राण इस तन के हाय नहीं रहना तुझा बनके अपने ही रंग में मुझको रंग दे धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे सोने सोने रंग में मुझको रंग देना रंग देना रंग देना ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൽ തഴുകും പ്രിയമാം സന്ദേശവും അണയും ഒരു ചിപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ പൂവിടുമാശകൾ കാണുവാൻ മോഹമാ പൂവിന്റെ മാറിലെ മധുവാർന്നൊരു നറുതേൻ തുള്ളി പോൽ ആർദ്രമാം നെഞ്ചിലെ പ്രിയമാർന്നൊരാ മുഖമെന്നെന്നും നീ അറിയൂ ആയിഷ तेरे बिना सोना पीतल तेरे संग भीतर पीतल आजा कटे ना रतिया तेरा रुतबा शाही शाही लिखे तकदीर तेरे हाथ से आई तेरा रुतबा शाही शाही तू ही जरा तू ही इलाही चांद और सूरज तारे कहते हैं ये ही सारे बाकी सब मिट्टी सारे तू ही सिकंदर दमादम 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 मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर ओ लाल मेरी लाल मेरी Wasn't that a soulful performance? Getting something different to MVP. Now, hold your breath because you're about to witness one of the most powerful ritual art forms of Kerala, Theyyam, known as the dance of gods. With dramatic makeup, divine costumes, and electrifying expression, Theyyam isn't just a performance, it's a spiritual experience. The word Theyyam comes from Devam, means God. It's not just a dance, but not just theatre, it is worship. In Theyyam, the performer is not seen as an artist, but as the living embodiment of the deity. Let's welcome this awe-inspiring tradition on stage.
When we started a festive seaon with Dahi Handi, followed by the Dhamakedar Ganesh Festival, and soulfully filled by the Kalakar team on the 8th day, I hope the Kalakar team is here, and a big round of applause for all the volunteers, coordinators, participants. And we continued, and we have the vibrant Onam festival, which is followed by Onam Sadhya tomorrow. A small announcement that there's a wonderful decoration out here, which is going to be auctioned tomorrow during the Onam Sadhya feast. So anybody who wishes to buy these beautiful paintings done by all the little girls is free to bid during the Onam Sadhya feast. We will be putting up the boli, and whoever bids the highest will get the wonderful paintings. And you can own it and display it in your house. And on behalf of the Managing Committee, Festival Committee, we are grateful to the entire team on everyone's behalf for bringing you the amazing colors of Kerala to the soil of Maharashtra. A huge round of applause to all the super choreographers, organizers, and talented participants. Thank you. Thank you, Uncle. Music is a universal language that touches every heart, and Tamil songs have their own magic with melody and emotion. To take us into that world of music, I now invite Subin to the stage to present a beautiful Tamil song. Let's encourage Subin with a huge round of applause. Okay, so this is a Tamil song. I'm dedicating this all our Tamil friends out here and Ilayaraja fans. So this is an old song, Valai Osai Kalakala. So this is sung by SPB and Ladadi. So I'll be singing along with the Ladadi. So we have kept original Ladadi voice in the track.
సంగీతం ఉండాలి నీ పేసి పేసిక వయసి చిన్న పెండి For how many days is it? 10 days. So the 10th day is Thiruvonam. That was yesterday. We celebrated it. And what is a special meal that is served on a banana leaf? When is the sadhya? What time? Okay, along with the sadhya, we have kept a Vadamali game. It's a game which is tug of war. And we want you to make a group of 10 people, and tomorrow morning I'll collect the registrations, so you can discuss amongst yourself for now, like who the team would be. The strongest team would be the winner for tomorrow, so you can choose a team of 10 members, and total there will be around 4 rounds, so that would be 8 teams, right? And let me ask you a next question. What is a sweet dish that is highlighted during the Onam Sadhya? Payasam. Yes, beautiful kid over here has answered. And which flower is considered essential in a Pookalam? The main flower of Pookalam. Very good. No. Any Malayalis out there who can answer? Not Chembarati. No. Main poo during Onam, it's we have also a Malayalam song. Not Chetti. Tumba poo, right. From their answer, Tumba poo is the main flower that is used during Onam. And what is the traditional dance performed by the women during Onam? Clue. No, it was performed today. It's main, like every year we do it. It's done in a circle. Louder, I can't hear you. Tiruvadira, right. And what is the name of the mythical king who visits us during Onam? And did you guess it? Who was Mahabali this year? Pratik Nair. And let me check. Is the team ready? Is the team ready? Wonderful.
So before winding up, we have a last performance. Can you guess what the last performance is? Usually from whom is it? The last performance is from which group? The Munda Boys. The Munda Boys of MVP. So time to end with a bang. Munda Boys are all geared up, full of energy, full of style, and maybe little too much of confidence. Get ready for whistles, claps, and cheers. Presenting the Munda Boys. അണ്ണൻ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ? ഇല്ല. എടാ മോനെ. Oh my God, Ranganan! Ranganan is here, guys. മോനെ രംഗച്ചേട്ടൻ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും. അമ്പാടെ അണ്ണ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ. ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങോട്ട്. ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ എന്നും വന്നാൽ
program. I thank all of the participants for supporting me and practicing day and night, even when I was not around. They used to practice, taking out time. Thank you so much. A big round of applause for Amrita for doing all the choreography and everything. Thank you so much for all your support.